I worked as a process improvement consultant also for different companies there, listening to their problems, understanding and providing them a solution. Yeah, if you talk about work culture in India and US, and as we are talking about almost 10 years back, so it was very different. That time in India, everyone is after you if you don't work. They won't let you work. It's the same thing till now, but maybe it has reduced to some part of something or that. But if you're doing good, they won't let you do good. And the work culture there in the United States is totally different. You're free to do. It's only your task. If you complete the task, no one is asking you where you were, what you did, and how you did it. So that culture was really important for me. And when I worked there for 7 years, after that I had something in my mind. I won't be able to work back in India now because the work culture is so different. Because we used to coordinate with the teams back in India, and even coordinating back in India was so tough that people don't listen to you. But sometimes, being from India, it was a little bit easier for me to handle them. Or if we compare American handling and Indian, it would be a little difficult. But we understand psychology of Indian too. So it was a little easier for us to understand. Okay, you need to get the work done. Get the work done in this way. So when you talk about the culture, it's very different, poles apart. But I enjoyed working back in US ever if I work in India. Okay, the whole process of applying and choosing university till the time you get visa is a little complicated one. If you don't know it, it's same with everything. If you don't know the process, it will be tough for you. And if you know the process, it becomes much easier. So I always preferred a consulting. So they helped me throughout, even the country to choose. They asked me properly like what exactly you want, why you want to go abroad, and which country you are looking for. So it's the same like a questionnaire given to you. You fill that up, you get to know, okay, this is the thing, then the country is choosing. Okay, what are your expectations from the colleges? Then you choose a college. When these things are done, when you get the admission, then the important part comes about your visa and immigration process. So even getting admission at a good university ease down the process of visa, and that's what happened with me. So when I got my Hofstra University letter of invitation, then it was the visa process. Okay, this is how you have to prepare. This is and for sure the consulting, the young immigrants, I was part with them. So they, from the starting, they gave me a process. This is the chain of line of command. You follow that, and it will be a piece of cake for you. They gave me, this is what will be asked in the interview, and this is how you have to prepare for the thing, visa interview. You know that the visa interview for the US is a most toughest part. So, but when you know what will be asked and your all the paperwork is complete, so it's not much of a tough task. So, preparing all the questions, all the interview questions that will be asked, and I have all the answers. So it was a quite easy process for me. US experience, when I say it was wonderful, if you ask in a gist, it was wonderful experience. Starting when I moved there, it was tough. It is tough when you land up anywhere, a new place, a new culture, a new society where you don't know anything. Being a vegetarian, it was very tough for me to even choose the food, but being a good cook, I've been cooking for almost last 25 years, so it was quite easy for me. But yes, the need to arrange everything. Just settling down takes time. So it helped me. Overall experience was wonderful. And what can I say? जो जर्नी आपकी रही ना 7 साल हाँ, and as I mentioned to you, I spent 7 years there. 2 years were tough. First 6 months were really tough. You feel like I'm going back because I landed up there in September. The next festival was Diwali, and you don't know anyone there. People are literally crying. They get so much things back in India, but there's nothing, you don't know anywhere. You are like, oh my God, where did you land up? I want to go back.
So those are the feelings that every Indian when they go, they get there. But I would like to say for all the future aspirants who are planning to go abroad, the 6 months is a tough time. If you pass that, then the next 1 year is tough. In the student life, you enjoy, but it's the really tough part. When you get a job, first 6 months are tough. Then you start settling down. Then the process becomes much easier. Then you don't want to come back. So if you pass those 2 years, then you are amalgamated to the culture. You feel very comfortable there. तो वही मेरे साथ भी हुआ. स्टार्टिंग में टफ लगा, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा. जब 7 साल हो गए फिर बहुत अच्छा लगने लगा. फिर जो मेरे वहाँ पे 7 साल मैंने स्पेंड करे ओवरऑल देखें तो फिर मुझे पता ही नहीं चला. आई फेल्ट लाइक पार्ट ऑफ दैट कल्चर. इंडिया में आके अजीब लगता था. इंडिया का रीज़न जब आप मैं हाँ 7 साल एक साथ रह लिया तो थोड़ा सा फिर लगने भी लगा कि यार इंडिया कम आना जाना हो पाता था. तो जब एक बार मैं इंडिया वापस ट्रैवल कर रहा था तो मैं एक बार दुबई में हॉल्ट किया अपने फ्रेंड के पास. उसने मुझे फोर्स किया, यार ठीक है बहुत टाइम यूएस में रह लिया, अब दुबई रहे. आई सेड नहीं यार, यूएस में बड़ा मन लग रहा है, वो मूव टू दुबई. बट देन आई स्टेड देयर फॉर 15 days व्हेन आई वाज ऑन अ ट्रांजिट वीज़ा. फिर वापस इंडिया आया. तो दुबई से मैं जब इंडिया गया तो मुझे लगा बड़ा छोटा डिस्टेंस है, इंडिया कभी भी आ जा सकते हो. एंड ऑल एनीवेज आई वाज प्लानिंग लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू स्टार्ट ऑन माई ओन. तो वो एक फिजिबिलिटी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि इफ़ आई एम इन दुबई, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, दैट वुड बी अ ईजी प्रोसेस. तो एक ये चीज़ माइंड में, और फैमिली के पास क्लोज, तो सडनली सो मैनी थिंग्स चेंज आउट देयर कि मुझे लगा कि एक ट्रांजिशन भी हो जाएगा. यूएस से डायरेक्ट इंडिया मूव नहीं हो रहे हैं, दुबई में हैं. तो दैट डिसीजन क्वाइट इंटरेस्टेड मी एंड आई टुक अ डिसीजन, ओके फाइन, लेट्स मूव टू मिडवे एंड देन विल थिंक हाउ थिंग्स गो अलोंग. अब थोड़ा आपने इसके फार्म के बारे में बता दो, फिर फ्यूचर गोल्स ले लेंगे. ठीक है कि आपने ये स्टार्ट किया, कब किया, क्यों किया, और क्या इसके विजन्स है. I started my tea cafe back in India. When I landed up in India, I didn't know कि यहाँ पे इतने सारे टी कैफेज़ का प्लानिंग चल रहा है. तो जब मैंने देखा कि जब मैंने स्टार्ट किया सोचना था लाइक क्या वो द फर्स्ट वन टू एक चाय को कमर्शियल इंडिया में लॉन्च करेंगे. बट व्हेन आई केम टू इंडिया आई सॉ चायोज इज इन द लाइन एंड चाय पॉइंट इज इन द लाइन. So I met both the founders of Chai Point and Chayos. They didn't understand my idea like consistent tea, do it for 45 minutes. They were like, no, okay, आप देखिए खोलिए. I started my own brand with the name Teapot. और as I mentioned that कि मुझे food industry में काफ़ी interest था. We opened almost 7 branches in Delhi NCR. It really went well. But due to the COVID pandemic, we had to shut down our cafes. But very soon I'll be starting them all over again. फूड का जो मेरा इंटरेस्ट था, व्हेन आई वाज इन द फूड इंडस्ट्री वी यूज्ड टू प्रोक्योर फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. केमिकल्स आर द थिंग दैट आई केम टू नो, ओके इतना केमिकल यूज़ होता है एंड वी गिव दैट थिंग टू कंज्यूमर्स एंड दे आर गेटिंग इल. इतनी बीमारियाँ चल रही हैं. देन आई स्टार्टेड विजिटिंग माई विलेज, सीइंग द फ्रेश एयर, सीइंग द फूड दैट वी ईट, हाउ इट इज़ ग्रोन. प्रीवियसली आई हैड नो आइडिया दाल कहाँ होती है, चावल कैसे होता है, सब्जियाँ कौन सी पेड़ पे लगती हैं, कौन सी नीचे लगती है. नो आइडिया, बट जस्ट यूज्ड टू कंज्यूम इट. जब मैंने ये चीज़ें देखनी शुरू करी, आई वाज सो मूव्ड बाय इट कि मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ अगेन सम न्यू वेंचर आई वांट टू स्टार्ट. जो हमें चीज़ व्हेन वी आर बॉर्न, हमें जिस कंडीशन में चीज़ मिलती है, सो आई मेड दैट एम ऑफ माइंड कि हमें उसी चीज़ को उस तरह से वापस देना है नेचर को. Mother Nature has given us so many things, then what is the way that we can give it back? Soil हमें मिलता है, इससे हम सारी चीज़ें डेवलप और प्रोड्यूस करते हैं. That is the main part. But due to chemicals, use of excessive chemicals, we have destroyed our soil. And when we are playing with the nature, ये हमें खुद बीमारियाँ दे रहा है. तो वो चीज़ हमने रोकने के लिए मुझे डिसाइड हुआ कि यार लेट्स ग्रो आवर ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फिर जब ये कहानी आई तो आया कि हमें यार खाद चाहिए पड़ेगी, वो कहाँ से लेके आएंगे ऑर्गेनिक के लिए. देन आइडिया केम कि वाई डोंट वी मेक आवर ओन खाद. देन द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्टेड. जब ये चीज़ें स्टार्ट करी, वी स्टार्टेड ग्रोइंग आवर ओन फूड. जब हमने वो प्रोडक्ट खाए
और जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, दे वर सो मच डिफरेंस. वी जस्ट ओनली हर्ड कि ऐसा होता है, बट व्हेन वी डिड इट प्रैक्टिकली, देन एवरीथिंग चेंज फॉर मी. देन लाइक ओके यार, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना और लोगों को बता सकता हूँ कि ये डिफरेंस है प्योर ऑर्गेनिक में, उतना मैं चाहूँगा किसानों को प्रमोट कर सकता हूँ, किसानों के पास अपना खाद पहुँचाऊँ, वो ऑर्गेनिक उगाएँ और लोगों को दें. तो दैट विल बी अ वेरी जनरस प्रोसेस. यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ कम खानी पड़ रही हैं, यू आर गिविंग अ हेल्दियर लाइफ. दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ परोक्ष पाथ, knowingly which you are doing it. तो इस वजह से मैंने ये फार्म स्टार्ट किया. एंड ऑल्सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज आई विल बी प्रमोटिंग एग्रो टूरिज्म हियर ऑल्सो. लाइक पीपल कैन कम, विजिट, सिट, ईट द नेचुरल फूड. चूल्हे की रोटी, मक्के की रोटी खाएं, सर्दियों में साग खाएं, वट एवर वी प्रोड्यूस हियर, वही फ्रेश फार्म से तोड़कर और वही खाएं. तो ये एक मेरा प्लान है. और दूसरा जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू वर्क विद द स्कूल किड्स ऑल्सो, कि जहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को बुलाएं, यहाँ उन्हें बताएं कि मूली ऐसे लगती है ज़मीन में, दाल पेड़ पे लगती है. तो आई ऑल्सो ब्रिंग माई डॉटर हियर कि उसे पता चले कि आम, अमरूद, सब्जियां आती कहाँ से हैं. दे ओनली नो दैट इट कम फ्रॉम फ्रिज. क्योंकि हम उसके सामने क्या होता है, बेटा क्या खाओगे, आज दाल खाएंगे. रसोई में से, किचन की शेल्फ में से डब्बा खोला, डब्बे में से दाल निकाल ली. उसे ये पता है कि वो डब्बे में से आती है दाल. शी डोंट नो कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड. इफ शी नोज द प्रोसेस, शी विल वेस्ट लेस फूड. तो मुझे ये था कि यार किस तरह से उसे बताया जाए. देन दैट आइडिया ऑल्सो केम टू, यार मैं अपनी बेटी को तो सिखा दूंगा, बट व्हाट अबाउट अदर्स. तो फिर मेरा प्लान हो कि यार स्कूल के साथ काम करते हैं, विल वर्क विद स्कूल किड्स एंड विल डिज़ाइन अ करिकुलम कि इस तरह से चीज़ें होती हैं. गेहूँ इस तरह से उगाया जाता है, चावल इस तरह से उगाया जाता है, तोरी इस तरह से पेड़ पे लगती है. मतलब आज आप बीज डाल रहे हो तो 3-4 महीने बाद आपको मिलेगा. तो चावल इज़ ऑल्सो सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. आप एक दाना लगाते हैं, फिर उसका वो होता है, पेड़ होता है, फिर उसे झाड़ते हैं, फिर उसके बीज को मशीन में जाके निकलवाते हैं. जब आपके हाथ में एक चावल आता है, और हम घर पे चावल 5-6 दाने ऐसे ही फेंक देते हैं. तो दैट वाज समथिंग मेन एम फॉर मी ऑल्सो, कि स्कूल के साथ टाइप करके हम कुछ इस तरह का प्लान करें कि स्कूल किड्स को, जो शहर की लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीखे कि वेयर वी गेट आवर फूड फ्रॉम, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एजुकेशन लेते हैं, क्यों जॉब करते हैं, कि हम रात को अच्छा सा फ्रेश खाना खा सकें. और अगर हम वही अच्छा नहीं खा रहे हैं तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ लाइफ. तो बस इसी मुहिम के साथ मैं लगा हुआ हूँ कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, एंड पीपल कम टू अ फार्म, रिलैक्स, फील rejuvenated, enjoy the feel, enjoy the serenity of this beautiful place and learn organic farming. हो सकता है अपने पीछे बैकयार्ड में भी प्लान करें, ताज़ा उगाओ, ताज़ा खाओ. जितने लोगों को भी मैं कन्वर्ट कर पाऊँगा, दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी. और जैसा मदर नेचर ने मुझे सॉइल दिया है, एटलीस्ट मैं अपने शेयर का तो वैसे ही वापस कर दूँ. अब नाउ दिस फार्म विल बी फुली ऑर्गेनिक इन नेक्स्ट 2 years. आधा तो हमने वर्मी कंपोस्ट डाल के सॉइल में वो स्ट्रेंथ आ चुकी है जैसा हमें मिला था नेचर से. 1-2 साल में और ऐसा हो जाएगा. तो माई पार्ट इज़ डन फॉर दिस, एंड आई प्रमोट अदर फार्मर्स, अदर पीपल ऑल्सो, कि आप भी ये लोग करें. तो जैसा आपको मिला था एटलीस्ट वैसा तो रख के दें वापस नेचर को. दैट विल बी अ रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम आवरसेल्फ एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशंस टू कम.